Today is 24th of March and today we are leaving for Chennai. Chennai क्यों? Because Chennai से हम लोग एक और जगह जाएंगे, that is called Velankanni. And जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, आपको देखने को मिलता रहेगा. So pretty much a very new experience for me. स्लीपर क्लास इस ट्रेन के अंदर स्लीपर के अंदर मैं बैठा हूँ आफ्टर मेनी ईयर्स. तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बट बहुत मज़ा आ रहा है. सो फार सो गुड एंड वी आर वेरी लकी दैट वी लेफ्ट एट दिस टाइम. मतलब इस डेट पे हम लोग निकले हैं बिकॉज आगे तो बहुत गर्मी होने वाली है. तो अ वेरी गुड टाइम टू गो. गोइंग विद द फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज अ मस्ट एंड शुड ऑल गो. कैन यू मूव ऑन? Good morning to all. It is 7:40 in the morning. So मैंने survive कर लिया 14 hours in a train, which is a long journey for me after a very long time. 14 hours in a train. So far so good. We are somewhere in the middle of India. So now tomorrow full day will be in Chennai and then even शाम को we'll leave for Velankanni. So let's see how the trip goes. So far the trip is very nice. Tomorrow we will leave for Velankanni in the night. कल रात को 10 बजे की हमारी ट्रेन है from this एक और एगमोर कोई स्टेशन है वहाँ से है. But so far we are in Chennai, so enjoy Chennai. Going to work from Chennai. ब्रेकफास्ट करने के बाद we had nothing to do because यहाँ बहुत गर्मी है. अब हम जा रहे हैं थोड़ा लंच. तो let's see how that goes. What a lovely food we had at Hotel City Tower. So if you're coming to Chennai, स्टेशन के पास ही जगह है होटल सिटी टावर. वहाँ जाना, वहाँ पे खाना खाना. इट्स अमेजिंग एक्चुअली. Now we are on a train from airport Chennai to Velankanni. Velankanni will reach morning at 5 AM. So मतलब 26 तारीख को हम पहुँचेंगे Velankanni. So let's see how Velankanni treats us. It's a shrine. It's actually a holy place for us. That is why we are going over there. See you in the morning. Bye bye.